सभी को राम राम जय श्री महाकाल. This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Reva Sarangal ma'am on the platform of Ankakshar Miracles. She is one amongst the 108 co-authors of the anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lay of Life. So today we'll have a lots of talks with ma'am. She's an international educator. So, ma'am, good morning. How are you doing today? Good morning, ma'am. I am good, thank you. And it feels great to be here along with you and sharing this great platform. Thank you so much, ma'am. So, before starting the interview, we will have the blessings from the God. So, let's join in. Karpura Garam Karunavataram Sansara Saram Bhujagendraharam सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि. So, आज मंडे है तो शिव जी की ब्लेसिंग्स. और बिफोर प्रोसीडिंग आई विल शेयर समथिंग अबाउट मैम. So let me know, ma'am, are you able to see my screen sharing? Yes, I can see. So talking about ma'am, she is an international educator, passionate reader, homemaker, traveler, mother, author, and this is the beautiful book of My Marriage Bliss versus Curse, an anthology of 108 co-authors, 7 Lee of Life, Learning, Earning, and Expectation. And this is a beautiful book of the ma'am holding the books. And this box that you're seeing, it has a customized pen. मैम का नाम लिखा हुआ है इस पे. एंड ऑल्सो अ बैच ऑफ 108 को ऑथर्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो मैम ने वेयर किया हुआ है. And I'll share with you all the book cover of Mobile Addiction, which is authored by me and my husband Abhishaik Chitraans, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles, an expert master numerologist. And for the paid consultations related to your career, health, growth and fall, एवरीथिंग यू कैन रीच आउट टू अस. और अंकाक्षर मिराकल्स पे जुड़ने के लिए आप हमें गूगल भी कर सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज भी है एंड यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो विद द अंकाक्षर मिराकल्स. एंड इंस्टाग्राम आईडी, मेरी आईडी है truth_of_life 82 and my husband's ID is Abhishek Chitraans. So for any concerns or for any inquiries, if you want to be a certified, internationally certified published co-author also, so उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. And moving on with the very first question, ma'am. What an amazing and powerful start of the article. If your passion becomes your job, then you are never tired of working. So, could you brief about this to our audience that how it all started and being an international educator? How do you motivate the young minds? We would love to know your passionate story as well as some tips for the youths out here. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. And thank you for making me a part of this platform, Akanksha Miracles. Yeah, my passion is teaching, and I realized this when I was in school. I used to see my teachers well dressed up, and the way they reach, they make every effort to reach to our heart and our mind. So that struck me at the time. I was in grade five, I think, and at the time, there like we used to have the Teachers' Day celebration, and I also, participated in that as one of the teachers. I wore a sari, and I was feeling great on that. And then slowly, I don't know how that idea got stuck here in mind. And I completed my studies and graduation, post graduation, and all. I got married. And after that, in 2006, I joined school for the first time. And it was my first school, Sacred Heart Convent School, Dalhousie. It is a co-ed school, but residential for girls only.
And my daughter got admission over there. So I was there. I too joined the school. I was there for 1 year. One session I completed over. And the very first day, I was little afraid also for, conducting the classes and delivering the lecture. The very first day when I went to the class, I was little bit nervous also. But that thing was somewhere there in the mind, like, like being a teacher and reaching out to young minds. Though 30 students sitting in the class, all girls and two, three boys. And like, it was great. When I came, like after conducting the classes, after the whole day when I was in my room, and that feeling was great. And that is the thing. So what I say, start looking, exploring yourself to see what thing gives you, satisfaction. And it is very good if we get to know that in the beginning only. Okay, then you can polish that thing. You polish that feeling, polish that quality of yours, and start working. And as I said, like if your passion becomes your job, then ma'am, that is, you are never tired of doing that thing. I conduct classes and as an international tutor, it is during early morning and late nights, but that thing is there. No, I have to join the class, the kid is there, I have to communicate with this, and I have to clear the thing to the child, and that the the result of the child speaks, and he says, ma'am, I got this many. We don't want anything. We want that feeling that the child says, ma'am, it is because of you. You helped me. That thing gives, satisfaction. And this is what a teacher always does. That's great, ma'am. It's really inspiring because I was also right now, so I have resigned because when I got married, then and now I'm a full-time author. So ऐसा था कि my dad was into the banking industry, so I joined the banking. So I'm an ex-banker now. But then teaching मेरा passion था, but ऐसा था कि मैं वो कर नहीं पा रही थी. So when I was into the 11th standard, so side by side मैं teaching भी कर रही थी. सो वही था कि आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप टीचर नहीं होती तो आप क्या होती मैम? यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर, देन इफ नॉट देन व्हाट? Always wanted to be a teacher, and I am thankful to God that he fulfilled this wish of mine. Means no other secondary option. I say that there are those who are, who get a chance to fulfill their dream, whatever they want to work. So that's I should say. It was always a first choice, and it is the last choice also. Now also, if I think something, now like if I won't do this and something else, am I going to think about? Nothing comes in my mind. Nothing comes. So that's why also you wrote those lines also. I'll just read that because they were very beautiful. If your passion becomes your job, then you're never tired of working. I really loved this line. Very tired of working. I conduct classes for 4 hours also altogether. In a day, sometimes I take 8 classes also, right in the morning with a gap of 1 hour, 2 hours. But that thing, not seeing the child on the screen, and the child is that innocent look and innocent, that mind and that face that pushes you, that gives you that push, okay, and you give your 100%. This is what. एग्जैक्टली सो वन जो भी अभी सुन रहे हैं उनको यही सीखना है कि पैशन के लिए टाइम निकालो, आप कैसे भी निकालो, बिकॉज आप कभी थकोगे नहीं और खुश बहुत रहोगे, बिकॉज प्रोफेशन तो है, वो तो आप कर ही रहे हो, दैट्स यू आर डूइंग इट, बट डू इन्वेस्ट योर टाइम फॉर द पैशन. You will never get tired of it. Also, you'll love to do it. And let's move on. Why we are here on the earth and how we should pay our gratitude to God for this blissful birth, ma'am. What I think is, ma'am, every individual on earth has some role to play. We are not, sent to the universe or sent to the earth by our wish. We are not the one who has chosen our parents. We are not the one who has chosen our kids. Okay.
But God has, when I was born as a daughter, now I'm a mother. So give your best to your kids, give your best to the society. You are here on earth for once only as a human being. Okay, you don't know what is going to happen once an individual completes the life cycle. So make your life journey memorable, not for yourself, but for the coming generations. So you will be remembered, and you should be remembered in a positive way. That thing should be there. If I won't be there, but I will be alive in the heart. मेरे बच्चे या उनके बच्चे, may God bless us with all this. They will remember something, not all the things, but they will remember one quality of yours that will be, passed by your kids to their kids and their kids. At least एक चीज तो याद करेंगे. So this is what to say. I say that we are here on earth to play some important role. I have not decided to come on earth. It was decided by God. He sent me. So I should, my act, my day should not be, should not hurt the feeling of others. It is not me. I am doing some work for which God has sent me. So I have, मेरा कोई ऐसा काम नहीं बनता कि मैं दूसरे को तकलीफ दूं. जब मुझे उस भगवान ने भेजा तो मुझे I should reach to the heart of the people. And whatever best I can do, I should do. और एक चीज I always think before going to bed, just think what you have done for the whole day. And if you think कहीं पर आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखा तो उससे माफी मांगो ताकि आपका आगे का टाइम अच्छा रहे. नहीं तो वो फीलिंग आपको कभी भी रिलैक्स नहीं. This is what I say. And I'm always thankful to God for blessing me a life, worth living. This is what I should say. So, on this, I'll say some lines from my end. Meditating Supreme Lord in night, each and every worry in life is easily coped up. The another day is super bright. So, just be grateful for what you are blessed by the universe. सो Thank you. मूविंग ऑन मैम, टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो गया है बिकॉज पीपल हैव रियली मिस्ड आउट ऑन दिस थिंग. सो कैन यू जस्ट हाईलाइट योर इम्पोर्टेंस ऑन टाइम मैनेजमेंट एज इट इज राइटली सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. Yes, you're 100% correct. See, we cannot touch the same water again. A river or a stream that is just flowing, I cannot touch the same water. One, it is Maybe some so network what I issue think there. is, Couldn't hear you clearly. I think it is from my side. Is it fine? Yes, now it's fine. Better, bit better. So, as I say, you cannot touch the river water again, the same water again. Once it is gone, gone. Right. So, what we should do is, हर चीज हम अपने आप, if I say I'll experience, I will learn from my experiences. So that is good, but I will, waste a major part of my life by learning everything from my experiences. What I should do is, I should learn from the experiences of my parents, my friends, or elders, and use my brain in it, and then I should add. So जो टाइम उन्होंने लगाया था वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, वो टाइम मैं बचा लूं और मैं कुछ और आगे चलूं. दिस इज व्हाट आई थिंक. और बहुत अच्छा होता है विद इन द टाइम इफ हमें अपने गोल्स, हमारे एम्स हमें पता लग जाए. अगर एक बार वो टाइम निकल गए तो मैम वो दोबारा नहीं आए. ठीक है, और वो टाइम वेस्ट हो जाए. That time once gone is gone. That get wasted. और उसको मैं कितना भी एफर्ट कर लूं, I cannot bring it back. Even 1 second that is passing by, I cannot bring it. I say like human beings are great and they can do everything. मैं एक सेकंड को भी वापस नहीं लेके आ सकती.
तो जो चीज मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ टाइम रहते, दैट आई शुड डू, ताकि कल को मुझे पछताना ना पड़े। आपके मन में कभी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अगर मैं ये उस टाइम पर ये कर लेती तो आज ये नहीं है। बिकॉज वो फीलिंग बहुत हर्ट करती है, बिकॉज यू नो योर कैपेबिलिटीज इन अ बेटर वे। आप उसके ऊपर काम करो और टाइम रहते काम, क्योंकि एक बार जाएगा तो वो टाइम दोबारा। एंड उसके बाद में यू नो, इट इज वेल सेड कि अगर आप अपने लिए काम कर लेते तो बहुत अच्छा है, पर अगर वो टाइम निकल गया और आप पीछे रह गए तो आपके पीछे 10 लोग हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप निकलो तो हम आगे हैं। तो अपना टाइम रहते ही उस टाइम को यूटिलाइज करो एंड वर्क फॉर योरसेल्फ, पॉलिश योरसेल्फ एंड मेक योर जर्नी मेमोरेबल, सक्सेसफुल, worthwhile. This is what. That's actually a great example that learn from the teachings of your parents and then उस टाइम को मैनेज करके आप अपने लाइफ में ग्रो करें. So that's actually a need of the hour example, I can say. So that's great, ma'am. Thank you so much for this beautiful example. एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है ऑन 5 जून. सो रिलेटिंग टू इट, और मैम ने अपनी स्पेशलाइजेशन भी की है इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. So basis on that, I'll ask a question to her. How do humans can contribute towards a peaceful nature and environment with the terms reduce, reuse, and recycle? As looking at the current scenario of the pollution, it's very important to highlight its importance with this question. Over to you, ma'am. I should say resources are limited. That this is again my subject. Resources are limited, and as we say, like our life, everything in our life, we are more on uh, artificial things or synthetic things. I should say synthetic, that are not natural. Synthetic things will remain in the environment for many many years. They cannot decompose easily, and they not only pollute the environment, they will destroy the beauty of the landscape, and they will remain in the environment for many years, polluting it, because that contains toxins. So the toxin will remain in the environment, that will pollute it. It will cause all the three types of pollution. It will cause air pollution, water pollution, and land pollution also. And as I said, resources are limited. We should more focus on sustainable development, so that whatever resources are available to us, make maximum use of them. Natural resources, I should say, make maximum use of them without wastage. And once the things are used, those things which can be recycled, that should be sent for recyclation. Or I should say, like, if I say a recyclation, using it again, but in different. And when if I'm reusing the thing, so if it can be reused, it should be reused instead of just throwing it. And this thing we should put in the mind of our kids also. I know this thing, that is very good, but I should give this knowledge to my kids also, being a responsible citizen. They should also learn to conserve resources. मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगी, मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ, what I am doing to make this earth beautiful, because when I came to this earth, this was beautiful according to that time. Now I should leave this earth by making it more beautiful. How can I do that? So I should work without wasting resources. Without this, I tell you one thing. I went to Pune, and there I saw a person, like, he was, ma'am, he was having food from पूरा गंदी जगह से, उसको खाने को नहीं. I told my daughter कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है. अगर भगवान ने दी हो तो उसकी कद्र करो. बिल्कुल. वो आपको मिली है तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने दिया है आप. क्योंकि अगर कल वो चीज नहीं होगी तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलेगी. तो इंपॉर्टेंस तब क्यों पता चले जब वो चीज नहीं है? इंपॉर्टेंस तब पता चले ना जब चीज. सो हर चीज
की कदर करनी चाहिए, चाहे वो खाना है, चाहे वो रिसोर्सेस हैं, और एवरीथिंग दैट यू आर ब्लेस्ड विद, you should be thankful to God and you should use it judiciously, I should say. The resources should be used judiciously without any waste. That's really thoughtful and deep thoughts actually, मैम. So अंकाक्षर मेराकल्स एंड टीम की तरफ से आज ही प्री एडवांस विशेस हैं सबको फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और मैम ने जो मैसेज दिया है, so थैंक यू सो मच रीवा मैम फॉर हाईलाइटिंग इट्स इम्पोर्टेंस, बिकॉज वन हैज टू रियली अंडरस्टैंड इट. बट मतलब स्वच्छ भारत का मिशन है, but still I observe the people throwing the garbages here and there. So definitely one has to काफी हद तक कम है, बट स्टिल इट इज देयर. एंड अगर हम उसको कंट्रोल कर ले जितना जल्द से जल्द, तो अच्छा ही है. और अपना ही जो है देश वो साफ रहेगा. और जैसे आपने रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के माध्यम से बताया इन 3 टर्म्स से, सो उस तरीके से वी कैन सस्टेन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. Yeah, सो we व्हाट. say it as 3 hours of, 3 hours to conserve the environment, to save resources. Yes. So, how was your feeling, ma'am, when you got to know that you are a certified internationally published co-author and जब आपको ये books मिली थी, so what was the feeling and those personalized goodies? What was feeling at that time? I was so excited when it was told that you'll be getting your books, okay, and some, gifts. The thing was not disclosed, but you'll be getting some. So, book covers, though we saw it as that was, that was discussed earlier and shown. So, more excited for the goodies also, because that is something that you deserve. That is something that you are given, okay, as a gift. And when I received the book is, मैम एक चीज होती है जो मेरी अपनी है, ठीक है, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे थॉट्स हैं, माय आइडियाज, वो मेरा अपना है ना. तो दैट फीलिंग वाज ग्रेट. वन थिंग. Second thing, it is not only you. There are 107 more people are there, more co-authors are there. You are one among those 108. And the thing that you've never thought of, कि आप कभी 108 लोगों के ग्रुप में sharing your ideas, sharing your feelings, sharing your knowledge, and sending or conveying your idea to society, to what I think is to make your life beautiful, like whatever you have, thankful to God, and live it by thanking him, God, and live it in a memorable way. Okay, आपकी family है, your married life, I should say, है ना, वो चीज आपको मतलब everyone has his own journey, ठीक है, and you're sharing your views, you're sharing your ideas, so you are sending a message to society how to make your life more beautiful. द टाइम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस है आपकी लाइफ, उसको और सुंदर कैसे बनाना, ताकि आने वाले टाइम में आप उसको याद भी करो, और एक सुकून होता है ना मैन, कंटेंटमेंट, दैट यू विल गेट, दैट यू हैव लिव योर लाइफ टू द मोस्ट. सो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी कि आपके आपके आइडियाज आपकी बुक में, और एक वो होता है ना कि सर्टिफाइड ऑथर, लाइक, है ना, सो दैट इज ग्रेट. अगर मैं खुद कोशिश करूं कि मैं एक बुक लिख रही, सबसे बड़ी बात ये, राइटिंग बुक इज नॉट इजी. Writing your journey of that 3-4 pages that you solidly have written, that is okay. Writing a book, and that among those 108 co-authors, that gives a very great this feeling, which I wouldn't have achieved by any of my efforts. So that was great. थैंक यू सो मच मैम. थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट. एंड जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में भी, बीच में भी आपने बताया इन द इंटरव्यू कि कुछ ऐसा काम करो कि आगे चल के बच्चे, उनके बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन से एक लिगेसी कहते हैं ना अपनी बनाओ, तो वही ऑलरेडी ऑल 108 हैव क्रिएटेड. क्योंकि आप रहें या ना रहें, बट किताबें जरूर रहेंगी.
तो ऑलरेडी आप लोगों ने एक लेगेसी बना दी है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि बुक्स आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, Yes, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट। और जो है यही नहीं, इंडिया से ही नहीं, कनाडा और बहुत सारी जगह yes, से, वेरियस प्लेसेस पीपल हैव ज्वाइन, अहमदाबाद, कनाडा, यूके, दुबई, वेरी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। ग्लोबल कहते हैं ना, ग्लोबल थॉट्स है। और साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, द बुक्स हैव बीन ऑल्सो प्लेस्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, true. यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। सो यू यू कैन बिलीव कि Yes, आप I have कहाँ seen प्लेस that. हुए हो, राइट। सो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग आपका कितना लेवल कहाँ? लेवल कहाँ है, राइट। नॉट ओनली मी एंड माई हस्बैंड, साथ ही 108 को ऑथर्स भी पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि अगली हमारी एंथोलॉजी जो अभी चल रही है, दैट इज अ फैमिली पजल, रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स अक्रॉस जनरेशन। सो वी हैव 108 को ऑथर्स इन इट, एंड नियर अबाउट 30 to 35 रजिस्ट्रेशन आर डन। सो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर बन सकते हैं। रीवा जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं उस एंथोलॉजी में। तो जैसे कि इतने डीप थॉट्स आपने मैम के यहाँ पे देखे हैं, और सेम ही आप वहाँ पे भी देखेंगे। और यही नहीं, वहाँ पे भी आपको 108 को ऑथर्स मिलेंगे और डीप थॉट्स रीड करने को मिलेंगे, बिकॉज वी स्टार्टेड विथ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले हमारी बुक आई थी, दैट वाज एंथोलॉजी विथ 51 को ऑथर्स, that is also available on Amazon and Flipkart. And then we did this My Marriage and Seven Lee of Life, and now Family. So these are such topics which is actually the need of the hour, कह सकते हैं, जिसपे कोई बात भी नहीं कर रहा है, और कह सकते हैं कि इसकी बहुत जरूरत है। क्यों? और साथ ही हमने मोबाइल एडिक्शन भी लिखी है, जिसका कवर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो इन सब चीजों के वजह से हम खुद को भूल गए हैं, परिवार को भूल गए हैं, और वुमेन्स की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करना था, इसीलिए ये मेजर टाइटल्स हमने जो है लिखे हैं। और अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी और बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ और बहुत सारे एक्साइटिंग टाइटल्स आएंगे। और इसी एक्साइटिंग जर्नी में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और मैम का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। मैम आप बताइए कि आप अंकाक्षर मिराकल्स को किस तरीके से रिकमेंड करना चाहेंगी टू द बर्डिंग ऑथर्स हु कैन शेयर देयर वर्ड्स टू सोसाइटी एज यू हैव डिड इट, एज 108 हैव डिड इट। आप मुझे देख लो मैम, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था अनाक्षर मेरेकल्स से। और मुझे मेरे एक नोन से पता चला, एंड दे लाइक दे टोल्ड मी इट्स बेटर इफ यू ज्वाइन ऐसे करके। जैसे मैंने पहले बोला है कि इफ आई वुड हैव ट्राइड राइटिंग अ बुक, दैट वुड बी पॉसिबल। और शायद वो कभी पूरा ही नहीं होता मेरा लाइफ में, शायद वो रह ही जाता। सो मेनी टाइम्स इट केम टू माय माइंड, मैं अपना देखूं, अपने बारे में देखूं, है ना। तो वो शायद कभी पूरा ही नहीं होता। जो इतना बड़ा काम इस प्लेटफॉर्म ने मेरे लिए बहुत इजीली कर दिया विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड दैट टू इन अ मच डेकोरेटेड वे। इतनी अच्छी बुक्स के कवर that were decided and presented. Young authors ko, or the budding authors, I should say, that this is the best platform. You don't have to do anything. You have to just send your articles to the team. They are working day and night, every day or every night. I should say, when you get up in the morning, क्या मिलता है आपको? एक मैम, एक नया जो आप प्रोसेस कर रहे हो, उस पर जो आप काम कर रहे हो, यू जस्ट गिव दैट लाइन, वी आर डूइंग दिस टुडे। आज ये बुक के कंपाइल हो गए हैं, ये इसको स्क्रूटिनाइज हुए हैं, अब ये पब्लिश होने के लिए जा रही है। एवरीथिंग इज डन बाय द टीम। वी आर सिटिंग इन डिफरेंट लोकेशंस। हमने क्या किया? हमने सिर्फ आर्टिकल को, बाकी सब थे बॉटम टू टॉप, एवरीथिंग वाज डन बाय यू आंसर। एंड हमें क्या मिला है? हमें सब कुछ ऐसे मिला जैसे मिलता है ना, एक चीज सबको सामने रखा हुआ मिलता है, हमें वो मिला है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। वी जस्ट शेयर्ड अवर थॉट्स एंड अवर फीलिंग्स and everything. So I should say to those budding authors, please come forward, share your thoughts, be a part of those 108 co, I should say, globally recognized co-authors. And I shouldn't say this, but I should say reap the fruits of the thing that you'll be sending.
without giving fertilizers, without adding water to the plant, without doing anything. Just, give your ideas and give your thoughts, and it will be presented in a presentable way to the whole. That Thank is you the so much. best platform. Thank you, thank you. Thanks for all the love and respect and your beautiful piece of thoughts and advices. It was really great meeting you. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मेराकल्स के साथ. जल्द ही मिलेंगे हम अगली न्यू को ऑथर के साथ. दिस वाज रेणु मंगतानी विथ रीवा सरंगल मैम. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thanks a lot.